चलो लेट्स डू द बैंक निफ्टी फर्स्ट. आज क्या हुआ वो रहने देते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम. सारी चीजें हटा देता हूँ. आई गेस फ्रॉम लास्ट वीक आई एम नॉट डूइंग इट, आई फॉरगॉट टू डू. तो जो भी एनालाइज किया था पहले वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज द मार्केट मूविंग राइट नाउ. तो इन वीकली टाइम फ्रेम इफ यू सी दिस, क्या सीन है मार्केट का. मार्केट मेड अ हाई अराउंड 42,000 41,000 ऑलमोस्ट 800 समवेयर के आसपास हाई बनाया in November 21. After that, market is moving downside, right? And recently, it had a great support at this point of time, which is 34,000. You can consider 34,500. 34,500. It had a great support, which it broke this now. Okay. So I'll do one thing. I'll do it from the beginning so that you can understand. So, nahi yaar. Again, it is a double work. So over here, if you see this level, market has taken support after from this point of time. If you see this, it has been taking good support every time whenever the market came at this level. Okay, 34,500. Easily it broke it last week. It had broken it because of the inflation. Inflation की वजह से इसने break कर दिया. This is your 200 EMA. Sorry. In this is our 50 EMA and this is your 200 EMA. Now, if I see in the daily time frame, what is happening now? So daily time frame में what has happened? That 50 EMA has crossed 200 EMA. ठीक है, from bottom over here 50 EMA has crossed 200 EMA from top to bottom. That means it is indicating a sell side, and this crossover was done on 12th May. But right now market is going upside. Okay, let me delete each of these things which we not require as of now. 37,000 level, it is not going to go upside. So I just want to make my charts a bit clear. ठीक है, this is one thing. So overall the market is still in the downtrend. Now let's move to the next thing. If you see this is in the daily time frame. What we are seeing at this point of time, हम लोग क्या देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मार्केट जो है कंप्लीटली डाउन ट्रेंड पे है. तो हमने क्या क्या रखा है, हमने यहाँ पे अभी क्या कर रखा है कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपका एक डिसेंडिंग ट्रायंगल. ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी डिसेंडिंग चैनल हमने ड्रॉ कर रखा है बाय टचिंग द support, by making the support and resistance. ठीक है, and exactly if you see this today also, market went up to this point of time. It tried to break but it couldn't. Now we need to understand one thing very simple, that if the support or resistance is made in higher time frame, it has to give us a breakout in that time frame only. It has to give us a breakout in that time frame only. We cannot expect the breakout in the smaller like 5 minutes time frame or 10 minutes time frame. 15 minutes is still valid if the retest is giving us. Okay, but 5 minutes में नहीं कर सकते हैं. And this is what exactly happened right now at this point of time, which is the greatest support which we are having it. Okay, अभी ये आपका डेली टाइम फ्रेम में क्या सीन दिखा रहा है, आपका मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, आज रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लेवल अराउंड 33,900 जो उस दिन का लो फॉर्म हुआ था. ठीक है, अब थोड़ा सा और 1 आवर टाइम फ्रेम आके देखते हैं, और बेसिकली 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, 1 आवर में देखते हैं. 1 आवर में व्हाट वी कैन सी क्लियरली ट्रेंड, वी आर सीइंग इट क्लियर ट्रेंड. At this point of time market broke. ठीक है, this is the level, market broke this level and small retest also done, and it is like last 15-30 minutes candle, if you see it is trying to go upside. This is that. Now let's 1 hour time frame. If you see the 50 and 200 EMA, where it is, this is your 50 EMA and market has closed near to your 50 EMA. Let's move to 15 minutes time frame. Now again
15 minutes time frame, 250 EMA will be acting as a great support and resistance. Those who are trading in Bank Nifty and Nifty 50, they know about it. Even if you don't know, should be knowing now. Now, right now, if you see, this market is completely in the range, and over here also we had this small range. Before giving us this good movement yesterday, market was in this range. That means we need to avoid taking up the trade in this area. Okay. In this area, we have to avoid taking up the trade. Maybe tomorrow, if market is opening with a gap up or gap down, that is a different story. Okay. Then how are we going to take up the trade next day, tomorrow? So first trade will happen. Okay. Tomorrow is anyway expiry, so we can expect the volatility. We can never expect the Bank Nifty to open like a flat opening. Like stocks, जैसे कि stocks आपका flat open होता है, index कभी भी flat open नहीं होंगे. ठीक है. It is always going to be a gap up or gap down. So first we'll consider the gap up or consider the gap down. ठीक है. It is right now closing around 34,198 के आसपास, means somewhere 63 के आसपास close हुआ है यहाँ पे. Now if this level gets broken, if like is easy for Bank Nifty to open beyond 34,000 level, तो थोड़ा सा एक pullback आएगा, we can confirm the trade and we can go for the trade for around 150 points to 200 from this level till this point of time. ठीक है. Now जब हम लोग यहाँ पे, if your 5 minutes candle, risk reward ratio is very important. अगर आपको trade यहाँ पे मिल रहा है, avoid. We don't need to go for the like 100 points at this point of time. You can do the scalping and all, that is different thing. But if you are going for a good trades, if you want like 200, 300 points, you cannot go for the trade at this point of time. If market is particularly either once again reversing from here or from here, proper change in the trend, if it is happening, we can go for the selling side at that point of time. जब ये हमारा पूरा trend change कर रहा है, तब हम लोग जा सकते हैं. We have to keep one thing in the mind. This is 200 EMA and this is 50 EMA, and it has already broken this level. So tomorrow, this particular 200 means above. If we are going for even for small buying also, okay. Let's say from here, if we are getting a buying opportunity at this point of time, okay, then we can expect it up to this point of time. यहाँ से हमें मिलता है अगर buying के लिए, ठीक है. अगर ये level से if we are getting the buying opportunity, it's good. We can expect it to go till 200 EMA. Now, if you see another thing over here, when do we have to? This is the key. Market is coming down till this point of time, and if you are going for the trade, then that is a different thing. Like these are the small trades for the 200, 150, 300 points. Okay, for a bigger trade, you might not get it. It has to break this level 34,000. Like today's high, what it had made, it has to break this level to give us any big movement. Basically, this descending channel which we are seeing, इसका breakout आएगा तभी हमें मिलेगा एक बड़ा movement, or else we will not be getting the big movement. ठीक है? Now, otherwise, ये level break होता है 33,800, then we can have a good movement up to next 300 moves. तो इसके बीच का छोटा trade जो होगा वो हो सकता है आपका. Now once again, यहां से मिलती है बाइंग तो ठीक है, अदरवाइज छोटा मोटा बाइंग अगर 200 EMA क्रॉस होता है 316 से, तो डे हाई का जो 200 पॉइंट के आसपास का हम लोग उठा सकते हैं. 200 EMA क्रॉस हो रहा है, if 50 minutes candle or even 5 minutes candles closing above this level, तो you can go for approximately this point of time 474 के आसपास या फिर 500 के आसपास का बुक कर सकते हैं, 150-200 पिप्स के आसपास. बट या we have to always keep one thing in mind, is the where is your risk reward ratio. If I am going for the trade, let's say any point of time I want to go for the trade, if I am going for the trade at this point of time, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे मैं टारगेट क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 200 पॉइंट ही देख रहा हूँ, बट माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2.28, so I can go for the trade. ठीक है. But if you are going for the trade at this point of time, you cannot keep your stop loss at this point of time. You might get hazy easily. You have to keep your stop loss over here. Logically, we have to keep. I cannot keep my target unnecessarily till this point. रखने के लिए आप कहीं पे भी रख लो. But what is the probability whether it can break it or not? Just to make yourself comfortable, do not take up the trade like this. कि ऐसा ट्रेडिंग मत करना कि यहाँ से जाएगा मार्केट, यहाँ पे for sure it is going to come 500 points. It may come, it may not come, but it is going to come only when this level gets broken, right? अब
जैसे कि अगर आपको किसी को बताना है कि हाँ भैया मैंने ये ट्रेड लिया था बट यहाँ पे आके रुक गया, सो आई हैड टू एग्जिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात होगी और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। So this is going to be the one where we can go for small to 150 200 points. For bigger target, this descending channel has to give us a breakout, or this level has to give us a breakout, then we can see approximately 400 500 points, okay. And second important thing is that in 15 minutes time frame, right now it is in the bearish mode, so tomorrow we might see a bearish trend, okay. Or maybe bearish trend कब होगा, basically when this level will be getting broken, then only we can have a bearish trend, ठीक है। and this is going to be important level for the bank nifty, तो यहां से चांसेस होंगे हाई की रिवर्स कर सकता है, अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर द निफ्टी 50। now let's look for sorry, that was for bank nifty. Let's look for nifty 50 now. nifty 50 का क्या सीन है, if you see this, इसका भी ये 200 EMA जो था, see remember whenever the 200 EMA crosses towards downside, that means the market is going to go towards downside. Whenever, if you'll see here at this point of time, it had crossed, market went up again, it crossed this level and went up again, this is the same thing happening. It has reversed exactly from the same point where it had reversed during the war time, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जाएगा ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि like ये last time it had kept on going like this, ऊपर चलता गया, अच्छा खासा मूव from I can see 8th March, say like almost in a month it moved from 15,700 to 18,000, which is nearly 2,300 move it had given us, and uske baad it came down. So we cannot expect the same kind of movement every time from the index or from any stock, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे what we have to do right now. If you see this in Nifty 50, देखो निफ्टी 50 में भी बहुत सिंपल सी चीजें काम करती है, ज्यादा एडवांस अगर अच्छे ट्रेड्स लेना है, ठीक है, सारी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी आपको इन ओवर ईयर, बट स्टिल सिंपल चीजें रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। 4 hours टाइम फ्रेम में व्हाट वी कैन सी दैट दिस वाज द पॉइंट वेयर मार्केट हैड पर्टिकुलरली ब्रोकन ऑल द लेवल्स, बट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग अ गुड, yeah, this is perfect what I have drawn, I guess, right? If you see this, it is touching majority of the candles. This 2-3 candles which has moved upside, maybe because of gap up or gap down, it would have happened, but later on it came into the area. Now today the same thing which happened, breakout हो गया, हमें लगा कि market can go upside. See, whenever the market is at a very strong level, ठीक है, and if it gives us a breakout, we have to avoid. I always personally avoid taking up the trades on the like high, like if it is a strong resistance or support level, I will always avoid. I do not want to risk my trade unnecessarily. I'll be happy if I'm not making profit, okay, any particular day, but I should not be losing money unnecessarily. ठीक है, this is your, you can call it as a symmetrical triangle, bullish pennant, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, बोलने के लिए क्या है, अब हमें समझना जरूरी है। For bank nifty it was the candles were below the 50 and 200. For nifty it is exactly opposite, it is these candles are above it, that means nifty 50 is comparatively bullish than bank nifty, right? तो ये थोड़ा सा जो बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कल बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ओपन हो, वो ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से होता है, कल आपको यूएस मार्केट जैसा भी होगा आज, उसके अकॉर्डिंग मालूम पड़ जाएगा। तो गैप अप भी ओपन होता है, तो सी मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे मार्केट के फ्लो की तरफ जाना है। मार्केट अपसाइड दे रहा है, अपसाइड जाऊंगा मैं अगर 200 पॉइंट का टारगेट रख रहा हूं, एंड इफ आई एम हैविंग स्मॉल क्वांटिटी आई कैन होल्ड, इफ आई एम हैविंग ह्यूज क्वांटिटी आई विल बुक इट, कीप ऑन बुकिंग, पार्शियल बुकिंग विल बी ऑलवेज हैपनिंग एवरी टाइम, ठीक है। So a lot of things comes around when you're trading in the options, ठीक है। Now let's see the bank nifty. So simple is that कि first thing we have to draw this point of time, ठीक है।
एक हमने यहाँ पे जो हाई बनाया है आज का, वहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। तो जैसे कि अभी कल के दिन, if let's say if this particular level, whole level gets broken, then we can have a good movement towards downside. अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर तो हमें अच्छी मूव मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया ना 16200 लेवल का, तो फिर हमें अच्छी मूव मिलने वाली है डाउन साइड के लिए, ऑलमोस्ट फॉर 150 पॉइंट्स वी कैन गेट इट। सो ये तो क्लियर है। और बॉस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट मार्केट विल हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 1600 टू 1650, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो if market is particularly reversing from here also in the second half, when the trend is getting changed, not just reversal, the trend is getting changed, then we can look for buy side. Again, over here, if market is reversing from here or from here, we can look for selling side. Selling means आप अपना देख सकते हैं basically downtrend move. Now, if market is opening with a gap up or slightly even flat, then how do we have to take up the action? थोड़ा सा यहाँ पे tricky है movement, क्यों? क्योंकि आज का जो ट्रेंड फॉर्म हुआ है ना, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, इट हैज फॉर्म्ड लाइक ये लेवल जो है आपका, ठीक है, एक काम करेगा कि मतलब कि ये लेवल हमारा ब्रेक होता है, देन वी कैन गो फॉर इट अपसाइड और डाउनसाइड। सिंपल थिंग रखना है कि अगर हमारा ये चैनल ब्रेकआउट होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का 294 तक, तो हम लोग कुछ 70-80 पॉइंट यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। पहला टारगेट बुक करना है, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया फिर दूसरे टारगेट के लिए जाना है, ऐसे नहीं जाना है बिना बुक करे हुए। वी डोंट हैव टू गो फॉर द ट्रेड, and as soon as if it is giving us a breakout or going towards upside, and if it has to form a trending market like how it has been forming day before yesterday and yesterday, ठीक है, if you see this how it has been forming, your EMA will be supporting you, ठीक है। तो keep on checking कि whether the market is going to be trend or like it is forming a trending market or not. So if we have to go for the buy side, if market is opening with gap up, if it is just breaking this level or basically this complete symmetrical triangle, then we can go for buy side. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, 361 से रिवर्स कर सकता है या फिर, ठीक है, पूरा रेंज में, ठीक है। बड़े मूवमेंट्स के लिए इट्स वेरी सिंपल कि हमें अगर बड़ा मूव चाहिए, ठीक है, तो बड़ा मूव आपको एक ही दिन मिलेगा जिस दिन भी ये लेवल जो 16500 के आसपास का लेवल जो है ना, ये ब्रेक करेगा जिस दिन भी। तो पहला टारगेट 160 का और फिर उसके बाद 250 का, ये जो गैप कवरिंग होगी वो मे बी इस वीक में हो जाना चाहिए गैप कवरिंग। अगर कल भी मार्केट अगर कल बुलिश हुआ और कल यहाँ पे क्लोज हो गया ना, तो वी माइट सी दिस नेक्स्ट डे इफ इट इज हैपनिंग, ठीक है, कि अगर कल मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है तो फ्राइडे तक हम लोग देख सकते हैं या फिर मंडे तक देख सकते हैं कि मार्केट इज गोइंग अपसाइड। एंड सेम गोज विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो, कि राइट नाउ इफ यू सी वी हैव देयर इज अ लॉट ऑफ गैप कवरिंग टू बी डन, ठीक है। तो अगर ये लेवल क्रॉस होता है, जो भी आज का हाई बनाया है, कल के दिन वापस से यहाँ पे आ जाता है मार्केट, 400-500 पॉइंट कल मिल जाता है हमें, ठीक है, देन द मार्केट हैज टू कंप्लीटली, अगर आप देखोगे कि यहां से रिवर्स कर रहा है, बिकॉज अगेन 787 पे आएगा तो रिवर्स करेगा। जिस दिन भी ये लेवल ब्रेक होता है 800 का मान चलो, विल हैव 35,000 लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल टू स्टॉप इट। इफ दैट ब्रेक्स वी कैन गो फॉर अनदर 400 लेवल। तो ये था आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 एनालिसिस।